आज के इस लेक्चर के माध्यम से हाउ टू डिटरमाइन नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशंस की शुरुआत करेंगे, जैसे IS 6403 1981 में दिया गया। We know that ultimate bearing capacity is the pressure at which soil fails in shear. Pressure at which soil beneath the footing fail in shear. So that we determined in the previous video, that is QU is CNC plus QNQ plus half V gamma N gamma, where NC NQ N gamma N gamma are the bearing capacity factor, and B is the width of footing, and gamma is unit weight of soil. All we studied in the previous video. Now net ultimate bearing capacity we find out to apply the factor of safety. So this is what is ultimate bearing QU equal to, if we say net ultimate bearing capacity, symbol is QA, then QU minus sigma, means we do not consider the surcharge weight coming from the soil at the base of the footing. So in case of general shear failure, QA is given by CNC plus QNQ minus 1 plus half V gamma N gamma, half V gamma N gamma, B gamma N gamma, and this unit will be always, if in SI it is in kilonewton per meter square, or whatever unit we are choosing for B and gamma, in that unit it will come in kilonewton per meter square. In case of local shear failure, the cohesion force will be 2/3 and phi also will become 2/3. So in case of local shear failure, Q dash A is 2/3 CNC plus Q N dash Q minus 1 plus half B gamma N dash Q. This will again N dash Q N dash gamma will depend upon the internal angle of friction, which will be 2/3 of the जनरल shear failure. जो भी हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालते हैं उसका 2/3 कर लेते हैं. विद दैट अगेन भी ट्रेजागी का जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स का टेबल दिया है वहां से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं. सो tan phi dash इक्वल टू 2/3 tan phi, और phi dash we can say tan inverse 2/3 tan phi. In case of if we plot the graph load per unit area versus settlement, then we find that in case of general shear failure, soil take more load, but failure is very sudden, and even with small creation of load there will be a lot of settlement. And in case of local shear failure, it takes less load and there will be a lot of settlement, and after some time, even without application of much load, settlement keep increasing. So we need to be very careful. First we should know which kind of soil it is, which formula to be utilized, and after application of formula we should apply the appropriate factor of safety. So in case of if we see here, we can see in case of local general shear failure, full soil take plastic equilibrium और इसमें bulging well defined, पूरा soil एक्ट में आता है, so that it takes more load, but failure भी well defined हो जाता है, bulging well defined. But in case of local shear failure, जो soil का radial shear जोन है या confined पैसिव जोन है well defined नहीं होता है,
सिंकिंग ज़्यादा होगी और बहुत स्मॉल बल्जिंग आएगी। इसका फेलियर ज़्यादा घातक होता है। विद लेस लोड structure will keep sinking and there will be a lot of loss to the even collapse हो जाएगा या कोई ह्यूमन का लॉस हो सकता है पैसे का इकोनॉमिकली। तो वी नीड टू हैव ए प्रॉपर आइडिया ऑफ द फेलियर कंडीशंस ऑफ सॉइल। तो IS 6403 में बेस्ड अपॉन द रिलेटिव डेंसिटी कौन सा फार्मूला लगेगा उसमें दिया गया है। तो टेबल 3 में उसके दिए गए हैं। तो हम लोग भी कैन से यदि रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 70% है तो देयर विल बी जनरल शियर फेलियर एंड जो वाइड रेशियो है इट विल बी लेस देन 0.55 और लेस, और कंडीशन तब होगी डेंस एंड वी कैन अप्लाई जनरल शियर फेलियर। और यदि रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 20% है एंड वाइड रेशियो मोर देन 0.75 है, मोर देन 0.75, मोर देन 0.75, तो लोकल शियर फेलियर का फार्मूला लगेगा एंड सॉइल विल बी कैटेगराइज्ड एज लूज। इन बिटवीन दोनों के है तो वी शुड फाइंड आउट, वी शुड अप्लाई बोथ द फार्मूला एंड देन वी विद द इंटरपोलेशन वी शुड टेक अप द net ultimate bearing capacity load and then apply factor of safety in case of intermediate. Wide ratio is nothing but volume of wire to the volume of solid, or relative density is the wide ratio in loosest condition, wide ratio in loosest condition minus natural wide ratio, then divided by wide ratio in loosest condition and wide ratio at densest condition, or it is generally expressed in the percentage, so multiply by 100 we get this. These results we get from soil exploration, जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं, लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट करते हैं। विद दैट टेस्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E एंड विद द बेस अपॉन वैल्यू ऑफ E we go for the finding out what is the relative density existing at the field. ये डिपेंड करेगा इन क्वेश्चनलेस सॉइल में व्हाट इज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। तो ये ग्रेटर देन 36 है तो it is clear case of applying general shear failure formula. If it is less than 28 then local shear formula. यदि in between है तो we should determine the Q net ultimate bearing capacity of shallow foundation by using general shear failure and local shear, and then interpolate to find out the exact result of net bearing capacity and then apply the factor of safety. It also depends on the penetration test which will be applied. We can find out in the field. If it is more than 30, the case will be general shear failure, and less than 5 hoga, it will be case of local shear failure. Or we apply the local shear failure formula in case of soft to medium soil जो है, in case of cohesive soil जो होती है। तो यदि हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QA 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, CU लेस देन 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द टेबल 1 बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स IS 6403 में टेबल 1 दी गई है। तो जो हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन डिटरमाइन करते हैं उसके बेसिस पे we find out NC, NQ, N gamma, and this we apply in our formula. If in case of local shear failure, we find out N dash Q, N dash gamma by modifying the phi dash, where we use the tan phi 0.67 and do the tan inverse whatever phi dash comes with that. If angle of internal friction is 10 or 15, we can say, we applied this here, we can see this 10 15, we find out that phi dash will be 9.91, means almost phi 10, it will be in this case N dash C, N dash Q, N dash gamma for local shear failure. If
angle of internal friction is 15. So corresponding phi dash we find out what is phi dash, and with that phi dash we go and read the table. If it is required, if it is say 9.91, we can do the interpolation also. In the standard interpolation, what is the value we need to know? If we know the x in between, we can find out what is y. So this formula is also there. Y is equal to y1 plus x minus x1 divided by y2 minus x2 minus x1, y2 minus y1. Standard interpolation formula it is given. So with this, how to determine net ultimate bearing capacity of the soil is completed. Thank you.